And let me also share the screen. Okay, एक मिनट लाइट में लगा के रखता हूँ. Okay. So आज हम थोड़ा सा एक और टेस्ट करते हैं, which is generally known as the condensation test. और उससे हम एक what we call p test deduce करते हैं. हम directly भी p test का कर सकते हैं, but this is better. Actually, it's easier than doing the proof directly. तो हमारा जो proof है वो इस पे डिपेंड करेगा, इस थ्योरम पे. Actually, दो थ्योरम्स छोटे से. वो होगा ये. Let me first choose this color. इसका ओके. तो वो ये था कि let's do this theorem that if n runs from 1 to infinity is a monotonic decreasing sequence, is a monotonic decreasing sequence of positive terms, of positive numbers, and if this sequence converges, the sub-series या उसकी जो subsequence की series है, not exactly, if this series converges, summation 2 raised to power n, a sub 2 raised to power n, अगर ये converge कर सकती है तो ये हमारे लिए टेस्ट बनता है convergence का. Then जो original sequence की series है यानी summation n runs from 1 to infinity converges, also converges. ये कभी कभी इस तरह ये वाला चेक करना कि whether ये converge करेगी easy होता है. और proof इसका काफी simple है. proof ये है क्योंकि ये monotonic decreasing है. I can write a1 is less than or equal to a1, right? Then I can write a2 plus a3 जो है वो less than equal to, या लिख लो since वैसे ये मतलब जो ना यहाँ दिया हुआ है monotonic decreasing sequence of positive terms. So let me write it. ये उसी वजह से जो हम हमारा argument उसी पे based is a monotonic decreasing sequence of positive terms. तो उसका मतलब ये है कि a1 के बराबर है, ठीक है. Then I can write a1 plus a2 is less than or equal to a2 plus a2. क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है. a2 जो है मैंने क्या लिखा डिक्रीजिंग, मैंने लिखा इट्स a2 plus a3 क्योंकि a1 तो आ गया. Because it is monotonic decreasing, a3 would be less than a2. So therefore a2 plus a3 would be less than a2 plus a2, which is the same thing as twice a2. Then if I take a4 plus a5 plus a6 plus a7, of course they would be less than equal to a4 plus a4 क्योंकि डिक्रीज हो रही है. जो पहली वाली टर्म है वो सबसे बड़ी होगी. अगर मैं a4 को ऐसे ही रिपीट करूं, so that would be 4 times a4. Then I can go on and on. Then I can take a8 plus a9. मैं जाऊंगा इसी तरह से up to a15 तक. Now it should be less than or equal to 8 times क्योंकि ये 8 terms होंगी a16. Oh, I should have write, हाँ मैंने क्या लिखा यहाँ 4 5 6 7. हाँ मैंने यहाँ गलती कर दी. What should I do? a8 into 2. कुछ गलत कर दिया फिर से. a4 ही है. गुड. मैंने क्या किया 7 तक मैं गया, फिर मैं गया 8 9 10. हाँ ठीक है. 8 times a raised power 16.
16 एनी वे इस 8, हाँ मैंने पहले 2 टर्म्स ली, फिर 4 टर्म्स ली, फिर 8 टर्म्स ली, ठीक है. But okay, that can be written as 8 times. ऐसे लिखें 2 raised to 4 is 16. यहाँ पे 2 cube नहीं है, 2 square है. तो मुझे एक कम क्यों मिल रहा है? तो अगर ये 4 है, 2 4 16, तो 2 4 8 आना चाहिए ना? नॉट रियली, क्योंकि इसको मैच होना चाहिए. जस्ट 2 स्क्वायर 2 रेज़ पावर 1 2 रेज़ पावर 1 2 स्क्वायर. यहाँ मैंने क्या गलती कर दी? हाँ मैंने एक गलती कर दी. इट हैज टू बी 8, क्योंकि ये टर्म्स कम हो रही हैं. तो a16 से नहीं, ये a9 भी a8 से कम होगा, a15, क्योंकि ये कम कम हो रही है. सो इट इज 8 टाइम्स a raised power 8. वही मैं सोच रहा था. बट दिस कैन बी रिटन as 2 raised to power 0 into a raised to a sub 2 raised to power 0, because 2 raised to power 0 is 1. This can be written as 2 raised power 1 a sub 2 raised power 1, because 2 raised power 1 is 2. Now this can be written as 2 square, right? Into a sub 2 square, and this is of course equal to 2 cube into a sub 2 cube, right? So in general, ये तो एक pattern बिल्कुल बन रहा है. So in general, I can say this is true. That is, a sub 2 raised power n plus a sub 2 raised power n plus 1. अगर मैं ऐसे ही बढ़ता जाऊं, क्योंकि they are all powers of 2. ये और ये मैच होता है, ये और ये मैच होता है, ये और ये मैच होता है. पहली टर्म वही है जो यहाँ डोमिनेट करती है, इससे बड़ी है. इसी तरह से जाते जाते I get to a term a sub 2 raised power n plus 1 minus 1 is less than equal to 2 raised to power n a sub 2 raised to power n. बस इतना ही था हमारा काम. You can easily check. देखो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे क्या है 15. So it is actually, यहाँ के 2 cube है ना, 2 cubes 8. This is actually 2 raised to power 4 minus 1, 16 minus 1, 8 minus 1, 4 minus 1. इसी तरह से यहाँ जो इंडेक्स है उसका एक पावर बढ़ा के 2 का एक माइनस कर देना. So this is our pattern. Now this is true for all n. So now if I add them, अगर मैं ऐड करूं, from these inequalities I can write this same thing. From these inequalities it follows what does follow, that summation k runs. अब इसी का मैं सम लूंगा, सभी लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का. 2 raised to power n plus 1 minus 1 a sub k is less than equal to summation k runs from 0 to infinity, क्योंकि पहले 0 था राइट हैंड साइड पे, 2k a sub 2k, right? Now which would be less than equal to, because it's a sequence of positive terms. So अगर मैं infinite नहीं, यहाँ k runs from 0 to n, sorry, लेकिन यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ this would be less than equal to k runs from 0 to infinity 2 raised to power k a sub 2k. Now suppose ये sequence जो है हमें दिया गया है, ये सीरीज जो है ये converge करती है, right? Now it implies that, या अगर मैं अब ऐसे करूं, then for any integer या natural number n, we can find m, I should write such that m is bigger than 2 raised to power n plus 1 minus 1 for some m. क्योंकि जो पावर्स ऑफ 2 है ये हर जगह है ना. जैसे अगर तुम्हारे पास है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, फिर अपने पास 3 है, फिर अपने पास 4 है, फिर अपने पास
2 स्क्वायर आ गया यहाँ पे, इसी तरह से है फिर 5 6 रहेगा 2 रेज पावर 3। यानी कोई भी नेचुरल नंबर हम अगर ढूंढे वो किसी ना किसी 2 के पावर से बड़ा ही है, एक्सेप्ट फॉर 1, राइट। और 1 से 1 से उतना फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे कहने का मतलब है, फॉर एनी इंटीजर यू कैन फाइंड दिस थिंग इज बिगर देन सम नेचुरल। कोई भी नेचुरल नंबर पकड़ लो तो तुम्हें कोई ना कोई n मिलेगा, सो दैट दिस इज ट्रू, राइट। हाँ, 1 के लिए भी ट्रू है क्योंकि मैं एक सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, है ना। एक्चुअली इट्स तब बराबर आएगा, राइट। तो once that is true, so it implies that अब अगर चूंकि मैं बढ़ा रहा हूं तो अगर मैं लेता हूं उसी m को जो इस 2n-1 से बड़ा है तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ेंगी, राइट, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि समेशन, आई कैन फाइंड दैट समेशन, आई थिंक मुझे एक मिनट ये नॉन नेगेटिव टर्म्स है, तो इसका उल्टा भी ट्रू है। यानी फॉर एनी m देयर वुड एग्जिस्ट सम पावर ऑफ n सच दैट दिस इज ट्रू, क्योंकि मतलब कोई भी नेचुरल नंबर लो वो हमेशा किसी दो पावर्स ऑफ 2 के दरमियान है, एक उससे बड़ा है एक उससे छोटा है, एक उससे बड़ा है एक उससे छोटा है। एक्चुअली किसी भी नंबर के पावर्स ले सकते हैं, मैं कह रहा हूं इन पर्टिकुलर 2। तो अगर ऐसा है तो इट इम्प्लाइज दैट ये ज्यादा टर्म्स है। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मैं फिर कहूंगा समेशन k रन्स फ्रॉम 1 to m, इन दैट केस a sub k it must be less than, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है, समेशन k रन्स फ्रॉम 2n plus 1 minus 1 a sub k, which is less than equal to summation k runs from 0 to infinity 2 raised to power k a sub 2 raised to power k. Now, since it implies that s sub m, जो mth power है, mth partial sum है, it is less than summation k runs from 0 to infinity 2k a sub 2k for all m. Now, since this converges to some limit, say L, it implies that Sm जो है it is less than equal to for all m belonging to the set of natural numbers. This is less than L for all m belonging to the set of natural numbers, which implies that Sm m runs from 1 to infinity as a sequence is bounded above. And since it is monotonic increasing, why is it monotonic increasing? It is monotonic increasing. Why? Because an जो है r is a sequence of positive term. इसमें एक एक positive चीज add हो रही है with each change of index, each increase in index is a sequence of positive terms. तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये monotonic increasing है, bounded above है, so therefore Sm converges which उसका मतलब ये कि summation an n runs from 1 to infinity converges. अब इसी तरह से इसी का एक दूसरा भाई है जो हम प्रूव कर सकते हैं, वो थ्योरम ये है कि if summation an, again conditions are same, an n runs from 1 to infinity is a monotonic decreasing sequence of positive terms, if and if summation se 2 raised to power n a sub 2 raised to power n runs from 0 to infinity diverges, then summation n runs from 1 to infinity also diverges. बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे जैसे हमने इससे पहले किया था। प्रूफ हम क्या करेंगे? प्रूफ हम लेंगे ये, देखो अगर हम शुरू करेंगे
How should we do? पहले तो ये कि A1 plus A2 अगर ये monotonic decreasing है, this must be bigger than or equal to क्योंकि पॉजिटिव टर्म्स हैं, this should be bigger than A2. मतलब लेकिन मैंने एक ही बार लिखा, that is important है, क्योंकि हम पॉजिटिव चीज ऐड कर रहे हैं. वहां पे मैंने लिखा था it should be less than equal to twice A2. यहाँ हम इसका थोड़ा उल्टा करेंगे. इसी तरह से A3 plus A4 जो होगा that will be bigger than equal to twice A4 because it अब monotonic decreasing हम यूज कर रहे हैं, because A3 जो है वो A4 से बड़ी है, because ये कम हो रहा है तो A4 A3 से छोटा है, तो ये जो है ये इससे बड़ा होगा. इसी तरह से I can take A5 plus A6 A plus A7 plus A8. It is bigger than equal to 4 times A8. राइट, क्योंकि A7 भी A8 से बड़ा है, A6 भी A8 से बड़ा है, A5 भी A8 क्योंकि डिक्रीज हो रही है बिकॉज इट्स मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस. तो अगर मैं इस जनरल पैटर्न को देखूं तो इन जनरल I can say that 8 उल्टा इसका 2n plus 1 plus so on and so forth up to 8 to raised to power n plus 1. ये सब इसके इंडेक्स है ना, ये जरा ध्यान में रखना. Is greater than equal to 2 raised to power n a sub 2 raised to power n plus 1. And just to make it more symmetric, I write it as 1 by 2 into 2 raised to power n plus 1 a sub 2 raised to power n plus 1. Okay, now we do adding the above inequalities. I get from above inequalities basically हम ऐड ही कर रहे हैं. Summation k runs from 1 to 2 raised to power क्या अपना n plus 1. ak is bigger than equal to 1 by 2 into summation k runs from 1 to n plus 1 2 raised to power k a sub 2k. So again by the same thing, and we can always find for any integer m, for any integer m there exists some n belonging to the set of natural numbers for any m belonging to n, there is an n belonging to m such that m जो है, अगर मैं मुझे क्या चाहिए अभी, I want it to be less than equal to, so I want m bigger. M is bigger than 2 raised power n plus 1. So which implies that summation k runs from 1 to m ak would be bigger than equal to, मैं positive terms add कर रहा हूँ extra, should be equal to summation k runs from 2 raised to power n plus 1 a sub k, which is bigger than equal to summation k runs from, of course, 1 by 2 raised power k, of course I'm going to n plus 1 a sub 2k. तो हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया, which implies that sm जो है is bigger than equal to p n plus 1, right? Where sm जो है वो है a1 plus a2 plus so on and so forth am, और tn plus 1 जो है वो बराबर है 1 by 2, इसको यहाँ लिख सकते हैं. So it is 2 into a sub 2 plus 2 square b2 square plus so on and so forth 2 raised to power n plus 1 a sub 2 raised to power n plus 1. Now since summation 2 raised to power k a sub 2 raised to power k runs from 0 to infinity, this diverges and is a series of non-negative terms
it is not bounded above. Therefore it is not, क्योंकि अगर ये bounded above होगी तो ये convergent हो जाएगी. So it's not bounded above, right? यानी तुम्हें हमेशा कोई ना कोई n मिलेगा, कोई भी नंबर दे दो वो इससे बड़ा होगा, लेकिन ये तो इससे भी बड़ी टर्म्स है, which implies that ये जो Sm है, m runs from 1 to infinity, तुम रीजन लिखोगे, मैंने लिखा वो डाइवर्ज, हाँ, is not bounded above, क्योंकि ये तो हमेशा इससे बड़े ही रहते हैं, वो बाउंडेड अबव नहीं है, ये भी बाउंडेड अबव नहीं है, बट Sm जो है Sm जो है, it is a monotonic increasing sequence, क्योंकि हम नॉन नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर रहे हैं. Monotonic increasing sequence, not terms. मतलब as a series जो है partial sums की sequence है, which implies that Sm जो है it diverges to infinity, जो हमने बहुत पहले sequences में रिजल्ट किया था, which implies that summation and partial sum अगर diverge करते हैं तो उसके corresponding जो series है summation a and runs from 1 to infinity also diverges. Okay, corollary हम इससे आराम से दिखा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल और भी तरीकों से दिखा सकते हैं कि summation 1 by n square and runs from 1 to infinity converges. क्यों? हम यही टेस्ट लगाएंगे, बिकॉज अगर ये है मतलब let an be equal to 1 by n square, so then I have 2 raised to power n, a sub 2 raised power n होगा बराबर 2 raised power n into 1 multiplied by 1 by 2 raised to power n का square, right? That is just equal to 1 by 2 raised to power n. ये होगा 2n minus 1, right? तो अगर a n ये है तो ये इसके बराबर है. So therefore 2 raised power a n a 2n is actually equal to its geometric series with common ratio less than 1. So therefore it must converge, right? So now which is a geometric sequence with common ratio 1 by 2, which is clearly less than 1. So therefore summation 2 raised to power n a sub 2n and runs from 0 to infinity, it must converge, and by Abel's theorem ये converge करती है. By Abel's theorem, summation an and runs from 1 to infinity, which is the same as summation 1 by n square and runs from 1 to infinity, must also converge. इसके बाद हम जैसे हम लोग क्वेश्चन इज जो मतलब रिमार्क में अगर मैं ऐसे लिखूं, हाउ अबाउट दिस, अगर मैं अब मुझे पता है जैसे हमें अभी तक हमने किया है दिस थिंग डाइवर्जेस, अब हमने देखा बट समेशन 1 by n square converges, right? तो हाउ अबाउट summation 1 by n cube, summation 1 by n raised power 4, or summation 1 by n raised power 1 by 2, summation 1 n raised power 1 by 4. मतलब इनमें से मतलब ये तो हमें पता है ये converge करती है, ये diverge करती है. What about other series, right? तो हम इसी की मदद से प्रूव कर सकते हैं रिमार्क, right? अगर मैं ये जनरल यूज करूं that summation, this is called p test, जो मैं अब लिख रहा हूं जो इसकी कॉन्सिक्वेंस है, हम p टेस्ट बोलते हैं कभी कभी, राइट? वो क्या है? summation 1 by n raised power p n runs from 1 to infinity converges when p is strictly bigger than 1 and diverges when p is less than equal to 1.
तो ये वंस एंड फॉर डिसाइड करेगा। वो कैसे? बाय द सेम थिंग। अगर हम लेते हैं लेट ए एन बी इक्वल टू 1/n रेज्ड पावर p, देन 2 raised to power n a sub 2 raised to power n, ये वाली जो सीरीज बनेगी ये बन जाएगा 2 raised to power n divided by multiplied by 1/2 raised to power n whole raised to power p, but that would be equal to 1/2 raised to power p, ऐसे होगा माइनस, चलो मैं पहले ऐसे लिखता हूँ n raised to power p minus 1, बनेगा ना? बिल्कुल सही। But that can also be written as 1/2 raised to power p minus 1 whole raised to power n. Now in case p जो है p minus 1 is positive, that is p is bigger than 1, अगर p bigger than 1 है, then we know that 1/2 raised to power p minus 1 जो होगा वो होगा less than 1, and summation, therefore अगर ये less than 1 है, it's a geometric series of common ratio less than 1, it means this series would converge, and अगर ये नेगेटिव बन गया इसका पावर तो ये ऊपर आ जाएगा यानी बड़ा हो जाएगा, and if p minus 1 is negative, that is or 0, so or that is p minus 1, p is less than equal to 1, then what? And 1/2 raised to power p minus 1 to her, it is bigger than 1, and therefore what? I think it should be bigger than equal to 1. So therefore summation a sub 2n 2 raised to power n and runs from 1 to infinity diverges, and hence by above theorem summation an n runs from 1 to infinity diverges. तो अब हमारा फैसला हो गया, इससे हम आराम से कर सकते हैं। अब ये summation 1/np है, अब हमें पता है ये कब कन्वर्ज करता है, when p is bigger than 1, converges, और अगर p is less than equal to 1 it diverges। तो हमें बहुत सारा कुछ पता चल गया। जैसे अब मैं कह सकता हूँ ये अगर मैं रूट n लेता हूँ यहाँ पे, that is summation 1/n raised power 1/2, और इसका पावर जो है वो less than 1 है, so this would diverge। और मैं कहूँ what is summation n cube, this must converge, why? क्योंकि इसका पावर जो है वो bigger than 1 है। तो इस तरह से ये सारी सीरीज सेटल हो गई ना powers of n अगर हो denominator में, so we can now directly see whether it will converge or whether it will diverge। हम एक और कर सकते हैं, हाँ एक और टेस्ट हम कर सकते हैं for monotonic decreasing sequence of positive terms, ये so let me write it down, theorem। So if n runs from 1 to infinity is a monotonic decreasing sequence of positive terms and if summation n runs from 1 to infinity converges, then limit n approaches infinity n times n must be equal to 0। ये उससे थोड़ा बेटर है क्योंकि हमें पता था अगर ये कन्वर्ज करेगी तो then जो n हटा के भी अगर मैं n का लिमिट लूं तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर ये पॉजिटिव तो वो तो हमेशा के लिए ट्रू है। लेकिन in particular if you have a monotonic decreasing sequence of positive terms, then this must be also true। We know for any convergent sequence this is always true, always, and this is in particular हम यहाँ n से अगर multiply भी करेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा as n approaches infinity, in case it is a positive term sequence which is monotonic decreasing। तो proof इसका जो हमने अभी किया उसी से आ जाएगा proof। Now let Sn be equal to the nth partial sum of our
positive sequence of sequence of positive terms which are monotonic decreasing, and मान लो इसका कोई लिमिट है क्योंकि हमें पता है ये कन्वर्ज करता है, suppose this is equal to L. Now if a sequence converges, right, तो उसकी कोई भी सब सीक्वेंस हो वो भी कन्वर्ज करेगी, वो उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी. It implies that limit n approaches infinity, s sub 2n is also equal to L for the same reason. Why? क्योंकि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ट करेगी उसकी कोई भी सब सीक्वेंस है, हाँ? एक सीक्वेंस ऐसी है S1 S2, इसकी एक सब सीक्वेंस क्या है S2 S4 S8, इसका सबसेट which preserves the order. तो ये कन्वर्ज करेगी, ये भी कन्वर्ज करेगी इसी लिमिट को. तो which implies that limit n approaches infinity, s sub 2n minus sn must be equal to 0. So which implies that, अगर मैं ये देखूं, s2 sub n minus s sub n किसके बराबर होगा? This should be, in case 2n is bigger than n, which is, it should be an plus 1. n terms हमने बाहर निकाल दी इससे, तो बचेंगे हम ये. अब चूंकि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है वो यहाँ पे यूज होगा. ये जो है ना, ये सबसे छोटी टर्म होगी, लास्ट वाली. जितना आगे जाएंगे उतनी टर्म छोटी है. which to be bigger than or equal to a sub 2n plus a sub 2n plus so on and so forth a sub 2n. और ये कितने a sub 2n है? Well, they should be how many? n times 2, n times a sub, मैंने क्या लिखा? मैंने गलत तो नहीं लिखा. मैंने क्या, मैंने शायद गलत कर दिया. नहीं, just a minute, मैंने थोड़ा सा, ये जो मैंने सीक्वेंस ली ये मुझे लेनी थी 2n इवन वाली, मैंने ली पावर्स वाली क्योंकि पुराना थ्योरम में पावर्स आ गए थे, तो यहाँ थोड़ा 2n रखना है. ठीक है, मतलब ये 2 raised power n नहीं है, यहाँ पे ये 2n है. बात एक ही है, अगेन सेम थिंग अप्लाइज. तो मैं ये सोच रहा था 2n 2n 2n, तो टोटली n टर्म्स है, n plus 1 से शुरू हुई और 2n तक गए, तो इट शुड बी n times 2 sub n, 2n, 2 raised power n. Okay, so it implies that 0, क्योंकि सारी non-negative terms है, is less than equal to a, and 2n is less than equal to s sub 2n minus sn. 2 raised power n नहीं है यहाँ पे, which implies that limit by squeeze principle n approaches infinity n times a 2n, right, is equal to 0, which implies that क्योंकि इसका लिमिट 0 है, यहाँ भी 0 है, स्क्वीज कहता है. फिर जो बीच वाली सीक्वेंस है, इससे पहले जो हमने थ्योरम किया था, बहुत पहले जब हम ऑफलाइन जा रहे थे, it implies that limit n approaches infinity 2n a 2n is equal to 0. बट मैं यूज कर सकता हूँ इसकी जो मतलब, बट a 2n plus 1, it will be less than or equal to a2n, so which implies 0 is less than equal to a2n plus 1 multiplied by non-negative तो है ही. just a minute, मुझे लगता है नेक्स्ट पे करेंगे. देखो ये इवन टर्म्स के लिए हुआ ना, अगर इंडेक्स इवन है, एक्चुअली मैं यहीं पे करना चाहता था, यहाँ पे थोड़ी सी जगह निकालते हैं क्योंकि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, जो इवन के बाद ऑड वाला टर्म आएगी वो इससे और छोटी हो जाएगी, which means that 0 is less than equal to 2n plus 1 a sub 2n plus 1, right, which is less than equal to 2n plus 1. ऐसे करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से, divided by 2n into 2n a sub 2n. कुछ खास नहीं, हमने एक यूज किया और ये कैंसिलेशन हो गई, तो बात एक ही है. सो therefore अगर मैं अब इसका लिमिट लूं, अब राइट हैंड साइड का क्या होगा? नाउ दिस, इसका लिमिट जो है बीच में
तो ये मतलब इसका तो 0 है as n approaches infinity by this thing, है ना, 2n base of 2n तो 0 है, और ये वाली टर्म का लिमिट क्या होगा, इट विल बी एक्चुअली 1 plus 1 by 2 plus 1 by n divided by 2, or it would be just 2. So 2 into 0 is 0. So therefore, limit by the squeeze principle, this is also equal to 0. And even ho ya odd ho, this limit is always equal to 0. Hence, I can say limit n approaches infinity, n to an is equal to 0 for all n belonging to set of natural numbers. तो इससे भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं 1 by n, तो सपोज ये कन्वर्ज करे, इसको अब मैं टेस्ट कर सकता हूं कि ये कन्वर्ज नहीं कर सकती. व्हाई? क्योंकि अगर ये कन्वर्ज करती, so then limit n approaches infinity, n into an, which in this case would be limit n approaches infinity, n into 1 by n, that's equal to 1, which is not equal to 0. So therefore this cannot converge. Therefore summation 1 by n does not converge. और अगर मैं लूं n square, तो इसी तरह से मैं कह सकता हूं, चूंकि summation 1 by n square converge करती है, as we can see that n into 1 by n square is 1 by n, which goes to 0 as n approaches infinity. क्योंकि दोनों ही they are positive terms of sequence, जो है उसकी सारी terms positive है, और monotonic decreasing है, क्योंकि n is in the denominator, तो ये monotonic decreasing है. So इसी पे हम और कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ये दूंगा होम असाइनमेंट, यही रूल यूज करना कि summation n runs from 2 to infinity, ये एक सीरीज है n into log n whole raised power p. तो सवाल है for which values, यही रूल यूज करना जो इससे पहले हमने किया, ये नहीं जो इससे पहले हमने किया, for which values of p does the series converge or diverge. तो ये कब converge करेगी, कब diverge करेगी? Same I can say this summation n runs from, चलो ये भी करो तुम शायद हम assignment. Show that summation n runs from 3 to infinity, 1 by log n raised to power p diverges for all p belonging to R. तो यहाँ की किसी वैल्यू के लिए कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी. तुम ये जो हमने सीखे टेस्ट उनको इस पे अप्लाई करना. एंड वी आर हैविंग अराउंड 1 मिनट. हाँ, तो लेट्स आज यही करते हैं, कल हम कुछ और टेस्ट करेंगे. अब हमारे वही है कन्वर्जेंस के कुछ टेस्ट जो हम आगे करेंगे, फिर उसकी एग्जांपल्स करेंगे, एंड दैट वुड बी, उसके बाद हमारा यूनिट 3 हो जाएगा. तो टेस्ट आर वैसे लेस देन 1 मिनट अब रह गया है, सो लेट मी एंड इट हियर.